One of the best example students of coins will begin from the post-Mauryan period. As you can see, students, when we talk about post-Mauryan period, the most beautiful coins were introduced by two dynasties, that is the Indo-Greek and the Kushan. When we talk about the Indo-Greeks, आप इनके coins देखें सबसे पहले. Okay, this is Magad के coins. Just a second. This got out. Yes. The next important stage with respect to coins begins in the post-Mauryan period. In that, two dynasties have outstanding examples, which is Indo-Greek, and apart from that, the second one is Kushan. When I talk about the Indo-Greeks, इसमें सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है? गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए इन लोगों ने पहली बार इंडिया के अंदर. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, जस्ट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, यू नीड टू ऑब्जर्व द कॉइन्स नाउ. द कॉइन हैज टू साइड्स, obverse and reverse. On the obverse side, that is the front side of the coin, you will always find the face of the ruler. Okay, the face of the ruler doing something, maybe playing a veena, maybe a martial pose, etc. Or the ruler and his wife also on certain occasions, as we see in the case of Chandragupta the first, who is the main founder of your Gupta empire. Main as in significant main ruler. Okay, तो front में तो ये रही राजा की शक्ल. All right. Obverse side में हमेशा आपको क्या मिलेगा? You will find symbols of religious deities. Okay. Apart from that, students, in the front side where the king is shown, you will find dates. Do we know the problem of dating in Indian history? Have you read the chapter pertaining to sources of ancient India? There is a area or there is a, क्या बोलेंगे आरोप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Blame. Okay. नहीं. Accusation. Okay. So the colonials have accused Indians that we don't have a sense of history. Indians lack a sense of history. Why do they say that? We don't like writing dates. In fact, half of the places we don't like writing names also. ठीक है? तो आप देखेंगे आज के टाइम में किसी मंदिर में जाओगे, 4 कुर्सी लगी हुई है, हर कुर्सी पे नाम होगा किसने दान करी. यस, लेकिन एंशिएंट इंडिया के अंदर दैट नेमिंग स्टूडेंट्स इज कंप्लीटली एम्प्टी. ओके, व्हाट्स इन अ नेम वाज द आइडिया. वी डोंट हैव डेट्स फॉर द बुक्स. Ramayana, Mahabharat, Vedas, we are still contemplating their dates. Okay. Apart from that, a same name person has been writing books for 6 centuries. How is that possible? Yes. When we talk about this guy who has written Arthashastra, Kautilya, Chanakya or Vishnu Gop, his name has been used in more than 3 centuries. And that is why historians have come with a new theory that maybe it was a title that was taken. Same goes for Vyas. Yes. So that is why the historians had accused us, the colonials accused us that we have no notion of history. But to negate that statement, we have few sources in India. These include Puranic literature, which has genealogical, chronological information. Moreover, students, we have proper biographies of rulers written from the time period of Harshvardhan, such as Harshcharit, which was written by Banabhatt. Raj Tarangini, history of the rulers of Kashmir. ठीक है? Apart from that, 2 other sources which help us in identification of date are coins and inscriptions. You can, first of all, on the basis of any organic data, organic material, which is kind of stuck to the inscriptions or the coins or the pot in which we have found the coins, etc. You can date them. Okay. Number 1, you can date them. Second thing is that coins पे तो वैसे ही date लिखी होती है. ठीक है? So there is no need to do that radiocarbon dating. Even the inscriptions always start with genealogical information. मैंने आपको बताया था प्रशस्ति के अंदर जब प्रशंसा करते हैं तो पहले अपने पूरे खानदान की इंफॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है? दिस इज माय दादाजी, दिस इज माय ग्रेट ग्रैंडफादर, दिस एटसेट्रा, एंड देन यू स्टार्ट विद योर मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स. सो coins and inscription, students, are very important because they have date on them. Keeping that in mind, the introduction of dates on coins was started by Indo-Greeks. Got it?
and that is why not only does it have artistic excellence, not only the material of construction is stand apart, even historical information can be reconstructed from these particular coins. ठीक है, they have dates, which is a very important lagging information in our country. Apart from date, students, will be important to note that the coins of Indo-Greeks are bilingual and biscript in nature. Of course, bilingual है तो biscript ही होंगे, हर लैंग्वेज एक स्क्रिप्ट में थोड़ी लिखी जाती है. तो हमारे पास में अगर इंडो ग्रीक्स की बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज इनके कॉइन्स पे देखने को मिलेगी, संस्कृत लैंग्वेज इनके कॉइन्स पर देखने को मिलेगी. This shows us the languages that they were patronizing. Also, what were the dominant languages of this particular time period? Isn't it a fabulous source of information? Just a small piece of coin and you get so much data about the dynasty. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बताती हूँ जो कि यहाँ पर लिखी है. मियंडर, मिलिंद, मिलिंद के जो कॉइन्स हैं उनका हमारे पास में पूरा कलेक्शन आ गया, हमें पूरा कलेक्शन मिल गया. उस कलेक्शन में ये पता चलता है मिलिंद एक छोटे से बच्चे की शक्ल से दिखते हुए एक बुजुर्ग आदमी तक इनकी कॉइनेज मिंट होती हुई दिख रही है. What does it tell us? It tells us that he had a long reign. Okay, even if the dates are absent at that point of time, अंदाजे से dates को निकाला जा सकता है. Okay, so the art on coins is reflective not only of the artistic skill but gives us deep insights into the history, the socio-political and economic aspects of that particular time period. तो bilingual है, biscript है, उसके अलावा राजा की शक्ल दिखाई है, पीछे रिलीजियस सिंबल बना हुआ है. अगर मेरे कॉइन के पीछे कॉन्च शेल बना हुआ है, बताओ मैं कौन से फेथ की हूं? आई एम वैष्णवाइट. व्हाट इज अ कॉन्च शेल? इट्स अ शंख. शंख किससे एसोसिएटेड है भाई? विष्णु भगवान से. वैष्णवाइट. ओके, सो वी ऑल्सो कम टू नो कि ये लोग कौन से रिलीजन को पेट्रनाइज कर रहे थे. वैष्णवाइट्स को कर रहे थे, बुद्धिस्ट को कर रहे थे, शैवाइट को कर रहे थे, एटसेट्रा. ओके, सो अगेन स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और आर्टिस्टिक स्किल भी मेरे ख्याल में फोटो देख के आपको समझ में आ रही है. अभी मैंने आपको पंचमार्क कॉइन दिखाए थे, अभी सातवां आनास के कॉइन्स दिखाती हूँ. यू विल सी अ स्टार्क डिफरेंस इन द आर्टिस्टिक क्वालिटी स्पेशली ऑफ दिस फॉरेन इन्वेडर्स. इनफैक्ट द गुप्ता कॉइन्स, इनका जो प्रोटोटाइप है या जो इनकी इंस्पिरेशन है वो कुषाण और इंडो ग्रीक के कॉइन्स ही होंगे. वो अपनी मर्जी से वैसे कॉइन्स नहीं बनाना शुरू करेंगे. ओके, so we have understood about the material of construction, what is represented on the obverse side of the coin, on the reverse side of the coin, the languages that we have utilized, okay, and apart from that, how it is reflective of the economic, political and social conditions prevailing at that point of time. Okay, date वाले point को जरूर highlight करेंगे क्योंकि हमारे पास dates की वैसे भी बहुत ज्यादा problem है. चलिए, कुषाण कॉइन देख के ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, when you talk about the Kushan coin, students, this is one of the highest achieved artistic skill. Okay, highest achieved artistic skill. What kind of dates are mentioned on the coins? We have things called Samvat, Vikram Samvat, Shaka Samvat, Gupta Samvat. On the basis of those samvats, the dates were mentioned. Later on, historians had read multiple texts to calculate the proper dates of Shaka Samvat, Vikram Samvat, etc. Okay, I think last class, okay, all my students were not there. I was taking an art and culture lecture. Some students of this class were there. Al-Biruni, Kitab al-Hind. What did we identify? The date of what? The date of Gupta Samvat was identified from Al-Biruni's Kitabul Hind, who pointed out कि शाका एरा के 241 years बाद में गुप्ता संवत शुरू होता है. This is how students we used to identify dates by rectifying the data from multiple sources, including the foreign authors. हमने ग्रीक्स के अकाउंट, अलेक्जेंडर के अकाउंट यूज करके अपने लिए नंद डायनेस्टी की डेट निकाली है. समझ में आ रहा है? ओके, so let's talk about the Kushan coin, students. The photo itself is reflective of the artistic skill. ऑब्वर्ड साइड पे राजा की शक्ल या फिर मल्टीपल पोजेस, मार्शियल पोजेस होते थे, तीर चला रहा है, तलवार लेके खड़ा है. म्यूजिकल आपके आर्टिस्टिक पोजेस हो गए कल्चर प्रमोट करते हुए, वीणा बजा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बैक में हमारे पास में रिवर्स साइड में क्या है? रिलीजियस सिंबल्स. फॉर इंस्टेंस आपको गुप्ता कॉइन्स में बैक साइड में सीटेड लक्ष्मी मिलेंगी. सीटेड लक्ष्मी इज अ सिंबल ऑफ वैष्णवाइट रिलीजन.
Okay, so we have religious faiths on the reverse side and king on the obverse side. किंग ने जो टाइटल अडॉप्ट किया है वो भी आपको कई बार कॉइन्स के ऊपर मिलेगा. फॉर इंस्टेंस, द एंसेस्टर्स ऑफ Chandragupta the first used to take normal titles like Raja Vaja. But when he came to power, at that point of time, significantly the geographical extent of Guptas had increased. Hence, he took the title of Maharaja Dhiraj. We know that the Kushan used to take title known as Kaiser. How do we know that? Their coins. The coins reflect the title known as Kaiser. Kaiser is associated to what? Caesar. He was a Roman emperor. The title Kaiser was so popular, it has been taken by the queens of England. It has been given to Mahatma Gandhi. He had the title Kaiser Hind, and then he renounced this title when? 1919, Jallianwala Bagh massacre. One more person renounced his title, Rabindranath Tagore of knighthood. ठीक है. कुषाण, ठीक है, हम लोग ने देख लिया ऑब्वर्स साइड पे क्या कंटेंट है, रिवर्स साइड पे हमारे पास में क्या कंटेंट है. डेट है, बायलिंगुअल है, बाय स्क्रिप्ट है. अगेन कुषाण की भी बात करी जाए, ये लोग ग्रीक यूज करते थे. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि कुषाण ने बैक्ट्रिया में से शाकास को रिप्लेस कर दिया था और बैक्ट्रिया के रीजन में ट्रेडिशनली ग्रीक लैंग्वेज चल रही थी क्योंकि अलेक्जेंडर के टाइम से वहां पर ग्रीक कॉलोनीज हैं. That's why Bactrian Greek was one of their official language and the second one was Sanskrit. Okay, and these languages can be found on Kushan coins. They have Shaivite, Vaishnavite and even Buddhist symbols on their images. Why? Because the Kushan king Kanishk has heavily patronized Mahayana form of Buddhism. कितनी बातें आपको इन कॉइन्स से पता चल रही हैं. Material of construction बताता है that the Kushans had the highest metallic purity gold coins, which tells us that they had a lot of money. Financially very secure empire. Okay, all right.